afternoon, everyone, and welcome. As Scott Belsky once said, entrepreneurship is not about ideas; it is about making ideas happen. Entrepreneurship is nothing but doing new things or doing old things in new way. Steve Jobs, who is probably the most famous entrepreneur in the world, founded Apple, which is today known as his legacy, in an effort to create something that would stand on the intersection of technology and art. If you are someone with an idea and a drive to make a significant change with it, but don't know how to turn your ideas into an articulate business plan, you've come to the right place. Good afternoon and a very warm welcome to all the future entrepreneurs to Encender 21, an entrepreneurial talk show hosted by ECEL ADGITM, where you get to interact with the best entrepreneurs around India. We would like to thank our director, Mr. Sanjay Kumar Sir, and faculty coordinator, Mr. Ankit Agarwal, for helping and guiding us to conduct this event. ECEL ADGITM aims to strengthen the entrepreneurial ecosystem as much as it's possible in order to induce the spirit of entrepreneurship in the student community. Since our inception, we have put all efforts in organizing various events to provide a platform for those who are willing to take a risk and start something of their own. Through our programs, we want to bring great ideas and people interested in making great things together to solve problems which are required for the welfare of the society. Every journey from a basic idea to an end product is unique and also very confusing at times. Turning an idea to a product is not just about forming a plan, but also knowing how to sell it. In today's competitive world, this can be very overwhelming at times, but we've got you covered. So, without further ado, let's welcome our first guest, who is an entrepreneur, intellectual property enthusiast, business consultant, investor, and seasoned trademark attorney. He is currently co founder and director at Bodhik Ventures. An extremely experienced professional in the field of business, Mr. Saurabh Trivedi is a well respected leader with a sixth sense for business. He inspires and educates business on how to leverage their innovative concepts to stand out from the mass and gain transaction. We now invite you to tell us about your journey. So, Thanks a lot, Navya, for this wonderful introduction. When we talk about this entrepreneurial journey, it's what you can say probably this requires a lots of efforts to make your zeal, your passion alive to become an entrepreneur. So it's really important for somebody to understand that all of your groundwork, homework, patience, calmness, all things, all kind of what you can say probably the efforts are required from your end to become an entrepreneur. When I'm talking about my what you can say probably initial days when I thought of to do something at my own, I started to work as a sales executive who just selling the postpaid connections. Okay, so it's quite difficult at that time to sell somebody a postpaid connection because they are not ready to pay some kind of particularly the fees in advance as a rental. Okay, so start from there. Then, but there are lots of things which I tried in my life as a job. Like first thing, sales executive selling a postpaid connection. Another thing, as a personal loan recovery agent, this is another job which I have done. Third, mutual fund selling. Perfectly, I have handled that part as well. But these all things are not an entrepreneurship. These all things which I just wanted to learn from the organizations, the things which is required. So I'm just preparing my homework or all of my checklist. What are the things required? So sales executive selling the postpaid connection, personal recovery agent when I've just been went to the clients who has just taken the loan, recovered the amount. So when I'm talking about nowadays my business where I require to take my invoice payment, so definitely those skills at that time which I got from my company is very useful for me nowadays. Okay, so selling a mutual funds, this is another job. Then apart from that, I worked in a law firm.
selling the legal services. So this is another task which I have performed. So there are a couple of things which I want to learn, and I still in this my entrepreneurship journey. I'm ready to learn from other entrepreneurs who just built a good business, or what you can say, probably a good empire or selling good things. So I'm happy to learn, and learning I haven't stopped till now. So this is a little bit just about the corporate when I have entered. Or another thing which I missed on. I placed from my college in Ceasefire Industries, selling a CCTV cameras. So this is another job which I have done. So the couple of things which I learned from all of my organization, the previous organization, gives me lots of strength to understand the business perspective, understand this corporate industry as a whole. Then I'm ready to start my venture, which is known as nowadays Bodic Ventures. So this is a gist about my organization. So apart from that, why I have started this Bodic Ventures in 2017 when PMO announced this Startup India or Make in India program. So I thought that I was worked with the different law firms, foreign law firms. You named upon the country: US, Europe, China, Korea, Japan, or any country. I've worked to sell the legal service to those country people, just to file the patent application in India. Okay, so convincing them to use our services. Then in 2017, the similar thing happened because PM announced this is Startup India program. So I thought that everybody, whosoever is going to innovate a new concept that is known as an invention in different countries or other countries, but yes, here in India, lack of awareness about the intellectual property. So we little bit hesitate. Like, are we able to sell these services in Indian market or not? But a Startup India program initiated, so we thought this is the right time when we can start our business and give our services to Indian clients, promote IPR awareness, work on their innovations. So this entrepreneurship required the lots of things from what is probably scratch. You have to do the market research if you just wanted to start. It's entrepreneurship is not just कि मुझे करना है क्योंकि लोग कर रहे हैं. It just been I wanted to become a good entrepreneur. I wanted to start something new. I'm not going to reinvent the wheel again. Then you are able to start your entrepreneurship journey. Whenever I'm going to talk with startups or entrepreneurs, they always tell me that, sir, we have faced a lots of problems because they have not done all of their homework. If they check the failures, the efforts which entrepreneurs has been done in to start their journey, then they really knows that what kind of pains they have taken. The college life, yes, it's really important because you are going to identify the co-founders. This is the right time when you just opt for your co-founder who do have some kind of complementary skills. When a startup asks me that I need a co-founder, from where I am going to find this co-founder? So college, you have to identify the same person who do have some kind of passion, zeal to complete or do this entrepreneurship. It's not about you are just going to take same people that, yes, we do have a same kind of vision. Yes, we can go ahead and start our entrepreneurship or this startup. Because you both are having the same skills. So I don't think so you are going to complement each other. You require a marketing team because you are good at a technical. So you definitely require to sell your products which you have innovated. Then you are going to start your entrepreneurial journey. You have to think about your intellectual property which is in your mind. You have to think about your branding, how you are going to get the traction in your business. What exactly you are going to learn from the previous thing. You have to do all the groundwork to start this entrepreneurship.
So this is what exactly I wanted to convey all the budding entrepreneurs who just wish to start their own startup. First, you have to do your homework properly, and you have to live your passion or zeal so that you become an entrepreneur. When we talk about the Paytm founder, even I think today's Saurav is also going to have some discussion or tell about this startup ecosystem. So definitely he's going to tell about something the Vijay Shekhar Sharma, who initiated or who has taken a lots of pain to become a unicorn. 8 साल 7 साल 8 साल की स्ट्रगल, देन एक अपॉर्चुनिटी क्लिक हुई, demonetization, and they become a unicorn. But before that, you have to do all of your task. आप सारी चीजें करना जानना चाहिए आपको, फील्ड में कैसे उतरते हैं, लोगों से कैसे कम्युनिकेट करना है, how you are going to sell your ideas, your concept, how you are going to manufacture, किस तरीके के लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे. Until and unless you are not aware of the all of these things, आप कई बार compliances में अटक जाते हैं हमारे startups. So we have to aware about all of these struggles कि सीए को कब जीएसटी पे करना है, टीडीएस कब पे करना है. So इन सब के लिए हमें ना एक टीम प्रिपेयर करनी चाहिए. I can't do all of these things as alone. I need team. I need people who are ready to work with me. और मुझे वही लोग चाहिए जो मेरे साथ मेरे पैशन को मैच करते हों. Otherwise I'm happy to do it my alone, और मैं 10 लाख 15 लाख इतना कमा के भी खुश हूँ. But if I just wanted to make my company grow at 10x or 100x level, then I need people who just take care or to work with me. आपने सुना है ना कि रास्ते में हमें पता है डेस्टिनी कहाँ है, बट हमें उस डेस्टिनी तक 5 साल में पहुंच पाएंगे ये हमें पता है. ठीक है, अगर मैं अकेला चलूंगा 5 साल में पहुंच पाऊंगा, बट मुझे पता है अगर मेरी टीम मेरे साथ होगी तो शायद हम बहुत तेजी से चल के उसको 1 साल 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं हमारी जर्नी को. आपका आइडिया डेफिनेटली आपका आइडिया आपके साथ होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अलाइव होना चाहिए. नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील. The concept which is working in US market or European market doesn't make those concept is also worked in Indian market. So you have to understand your audience, target segments. So जब भी मैं बात करता हूँ हमारे entrepreneurship की, we have to give कितना अपना 100%, 100 भी नहीं 150% आपको डालना होता है. I've taken one. I just wanted to tell you one event when I required to work 24 hours in my office. I have to call a US guy, and you know that in Indian time it's start from 8 p.m. Then it's early morning in US. So I have to wait for one client just कि वो एक अपने टाइम पे उठ पाए और मुझसे बात कर पाए. I've done that effort because otherwise I'm not able to tell or train my people. मैं उन्हें बता ही नहीं पाऊंगा ये कैसे हो सकता था या मैंने कैसे किया था. There are lots of कहते हैं secret sauces. वो सारी चीजें मैंने कहते हैं ना जमा करी, लोगों से सीखा, learn करा, and then I have started this body ventures. So it's a hard work of probably you can say 7 years of hard work. Then we thought of to start my own. I find my co-founder वो ट्रेडिशनल एक्सपर्ट है लीगल सर्विसेज का. आई एम मार्केटिंग एक्सपर्ट ऑफ दीज लीगल सर्विसेज. सो कॉम्प्लीमेंट्री थिंग्स थी. इस वजह से हम इस जर्नी को सक्सेसफुली 3 साल हो गए हमें इस बिजनेस में कि 3 साल हम लोगों ने 3 तरीके के टाइटल ज्वाइन किए. कंसल्टेंसी फर्म, यस वी आर एबल टू गिव द कंसल्टेशन टू स्टार्टअप. सेकंड, लीगल because we are lawyers. I have completed my LLB as well during that journey. So third, investment firm, because we have invested in a couple of companies like eByGo, Mera Cashier. So then we achieved 3 of our tags: consultation, legal, and investment firm. So it's really important for people to understand this entrepreneurship. और हर बार जरूरी नहीं है कि हम सक्सेस स्टोरी से ही सीखें. We have to think about the failures
So sorry, I think there's a technical glitch. Uh, The issue has been resolved now, so please continue. We are so sorry so for perfect. that. No worries, no worries. I just keeping my time. So I just wanted to take few more minutes and then I'm happy to end it. I think some of my other fellow speakers are ready to wait on this talk show. So the thing is that when I'm talking about the failures, you have to learn from failures as well. और उस failures को ना accept करना बहुत important है. हम स्टार्टअप जब कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं 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 मुझे ही सब कुछ पता है आप लोगों को नहीं पता. I have to pick up those kind of solutions from different market और सोचता हूँ कि इंडिया में ये solution work कर जाएगा और I'm going to present as a business idea in front of the investors because investors didn't know about these concepts which is running in different part of the world. Might be. And you thought that you are going to present an innovative solution. So मेरी दो ही चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि एक पहला आपका आइडिया should be unique or some kind of a unique USP होनी चाहिए आपके कॉन्सेप्ट में. And you have to focus on your concept or to sell your product, your services in the market. Okay, don't worry about the investment part. That will come into picture definitely once you grow enough, getting some kind of traction in your business. So don't start your startup only to get the investment. Do your startup if you wish to grow or if you just wish to find a good solution for the right problem. This is my message from this platform to all the budding entrepreneurs. So I think I have taken almost all the time, completed my time which is allocated by the organizers. So this is it from my end, Navya, and the whole team of ECEL ADGITM. So if you require more things, let me know. Otherwise, we are happy to conclude this. You're not audible. No, I'm saying, is this like I'm happy all things has been sorted now. So Yes. do you want have some more questions for me to answer that, or you are Yes. happy to wind up? Yeah, please go ahead. Yes, sir. So whatever you said, it was really insightful and knowledgeable. And you did mention about tips about you. You mentioned that we should do our homework and we should research before we enter this. So do you have some tips about the what kind of homework should we do? What are because when we research, it really gets very overwhelming, right? We have to make sure we have to look for everything. So if you could tell us that focus on these things more rather than all of it. First thing, when I'm talking about anybody to start this entrepreneurship journey, they have to do some kind of market research. Market research covers lots of things. In the books, there are lots of things mentioned about this market research, the tools, quantitative tools, qualitative tools. But that is not I'm just talking about. I'm talking about you have to collect the data. Data means who all can become your target audience. Okay. What kind of feedback you are going to receive the person who is using your service or product. Okay, so this kind of research is really required at the first initial point. Second, the testing of your idea. How exactly you are going to test your idea? You have to find your fellow members. Might be if you are in college, take the feedback from your professors, from your colleagues that I wish to start. And every time you are not getting the positive feedback, so you have to end up as a negative feedback as well with you. So this is the right thing. Then the third thing about your intellectual property, which you are going to make. Market research, idea testing, intellectual property, selection of your co-founder. This is really required. I told you about that the person who is having some kind of complementary skills, that guy is definitely going to work with you. Branding, this is really required because you are just going to build something credible in the market. You wanted to sell your service, you wanted to sell your product. 6, working space. Right now, after this COVID, that is not becoming a problem because we all know that we are going to work virtually.
But if yes, we require this kind of working space, we do have possibilities to get it in the incubation centers. I think all of the colleges, universities have Atal incubation centers, TBI. So there are lots of things where they can just take their space. 7, your mentor, guru. When we talk about that, वो हमने बात करी थी महाभारत की, जब भी हम बात करते हैं तो कृष्णा, अर्जुन, बिकॉज अर्जुन के मेंटोर थे कृष्ण जी, एंड ही हैड अ लॉट टू गाइड हिम कि कैसे चलना है. सो मेंटोर आपको आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद आपका बिजनेस प्लान. इट्स नॉट बिजनेस प्लान. आप कहते हो, जब भी मैं बात करूं स्टार्टअप से ना, वो कह देता है सर हम ना ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट व्हेन आई आस्क ऑन अ पेपर, इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेक. बहुत डिफिकल्ट होता है, उनसे ये बन नहीं पाता, बिकॉज दे थॉट वो जो आइडिया हमने बोला सर वही है, अदरवाइज सर हमें कुछ और पता नहीं, और मैं एफर्ट भी नहीं देना चाहूंगा. सो आपको बिजनेस प्लान रेडी करना है. देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 9, कंपनी इनकॉर्पोरेशन. मैं इसको लास्ट में लेके चल रहा हूँ बिकॉज द होमवर्क विच यू हैव टू कंप्लीट. अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं, देन उतरते हैं मार्केट में और अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड टू कंप्लीट दिस होमवर्क और चेकलिस्ट. Yes, sir. Thank you, sir. We'll make sure we check all of this. Like, मैं तो पक्का I'll make sure कि ये सब तो मैं research करूँगी अपना start करने से पहले. So we have some questions from our live stream as Sure. well. So Rajesh Agarwal is asking, how can I reach out to you for mentorship? You said not to research about a mentor. So how can someone reach out to you? Absolutely, Rajesh ji. I'm almost present in more than 10 to 15 Atal Incubation Center. Okay, AIC ADT Baramati. If you are in Goa, AIC GIM. If you are in Hyderabad or in the southern region, AIC Rays would be there. So I am there on different platforms on all of these Atal Incubation Center. So you can approach me. Otherwise, I'm happily available on social medias like LinkedIn. So you can just reach it to me on my email address as well, saurabh@bodhikventures.com. I'm happy to guide you on your entrepreneurship journey, or happy to support you in mentorship as well. Thank you, sir. And sir, Anand Goyal wants to ask, he says, throw some light on getting the startup registered or getting the trademark patent at early stage when the startup is not making much profits. Anant, whenever we are going to start this startup, so you know that Startup India website. Okay, if you just wanted to go through that website, there are lots of things which you have to mention about your startup and getting your certificate of DIPP from there itself. Okay. Apart from that, if you're just going to incorporate your company, you have to take the help from CA to register your company as a proprietorship, LLP, or private limited company. Okay. Apart from that, if you just wanted to start your consultancy business, I think nothing has been required, because otherwise you are just going to involve in GST, TDS, all of this process. So first of all, you have to achieve that turnover of 20 lakhs. जब अपनी company registration करेंगे, जब अपनी GST लेंगे, perfectly fine for you. So this is really important for a startup कि मेरे को पैसा कब खर्च करना है और कहाँ खर्च करना है. When we talk about this trademark, patent or copyright, idea जब भी आपके mind में आए, or that is a technical idea, just go and file the patent application. Technical idea. Whenever you thought of that, this brand name which I thought of is very innovative and वो बहुत ही disruptive होगा, just file a trademark application. This is not what you say, probably you have to file on individual name. कर सकते हो आप. सौरभ त्रिवेदी अगर trademark file करना चाहता है वो कर सकता है. जब कंपनी को देना होगा, I am going to ask to my company, I'm ready to transfer that trademark application to my company. But intellectual property you have to think at very initial stage. और ये intellectual property patent इसलिए important नहीं है. I'm just taking little fast. ये पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खाली आपको स्टार्टअप जर्नी में ही हेल्प नहीं करेगी, आपको एंटायर, अगर आप स्टूडेंट रहते हैं तब भी हेल्प करेगी. अगर आपका पेटेंट बहुत हेल्पफुल है तो इंडस्ट्री आपसे बाय आउट कर लेगी. आप लाइसेंस कर दो अपनी टेक्नोलॉजी को, यू आर बिकमिंग मोर क्रेडिबल अमंग योर पीयर्स. जॉब में आगे रहोगे अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लेते हो एट द वेरी इनिशियल स्टेज. So this is it from my end on this question, Anand. If you wish to ask more, I'm happy to take this offline as well. You just reach me at saurabh@bodhikventures.com. Happy to serve you.
Thank you, sir. So we have one more question. Chirag wants to ask that what were your sacrifices at the early stages of your journey? Uh, uh, Chirag, when I'm talking about the sacrifices, one is the money. This is the first thing, because you have to compromise on your salary part. I completed my MBA and I thought of to join as on a bigger position, that I'm going to become a managing director or manager in a very good company, but that has not been happening. So I have to compromise my salary. I have started it on 12,000 rupees. If I just taken a little bit back, then started as a sales executive at a 5,000 rupees monthly. So this is where I have compromised. Then you, what you say, probably don't give lots of time to your families. There is a time requirement, but you have simultaneously you have to perform your professional tasks. You have to complete your job responsibilities. So I have sacrificed that time with my family. So these are a little bit things which really required and ask the sacrifice from my end as well. Okay, so thank you, sir. And also, Anand wants to ask that what is the average cost of filing a patent? If I'm Anant, I'm giving you because we have made a tool, do it yourself tool on Bodhic Ventures website. Filing a patent application costs you 5,999. It's almost a 6,000 to file a patent application. But if you just wanted to do it by yourself, the government fee is 1,600 rupees only to file a patent application. The rest process do have some cost, but not at the very initial stage. So you have to make your own strategy when you are ready to ask for or giving the request for examination to the patent office. So this is really required. Or if you just visit our website, Bodhic Ventures, there is one tool, do it yourself, and you can file it under 6,000 rupees. Thank you, sir. Thank you for your insightful words. And we all have a lot to learn from it. Thank you so much, sir, for joining us today. Thank you, Navya, and whole eCell ADGITM organizers. And this is also one kind of startup, because you learned a lot from these kind of events, and you have to work all of this thing in the technological apart from this logistic part. So this is a wonderful experience which you are going to get it by doing these kind of events. So all the best. Continue with these kind of programs, and I think I just wish to conclude this because of my other fellow partners are also waiting. So thank you for giving me this opportunity to share my journey. All the best. So, thank you. We were honored to have you with us. Um, if
टू गिव वन डिस्क्लोजर, ये मेरा जिंदगी का आखिरी इवेंट होगा पेटीएम वीपी में. आई हैव रिजाइंड एंड आई विल बी स्टार्टिंग माय ओन स्टार्टअप फ्रॉम दिस नेक्स्ट वीक. तो आज मेरा आखिरी इवेंट है ये आज का, और दिस विल बी द लास्ट इवेंट इन माय लाइफ एज वीपी पेटीएम. So that's the reason also I joined this event, because I realized मैंने कहा मजा आएगा. So we can start. I think जो डिस्कस हुआ था Q&A है, you can start asking questions. Yes, sir. Just before asking questions, I would personally like to know more about your journey. That how you joined Paytm and what were your struggles in your earlier days, so that as most of the entrepreneurs who are new to this world, they'll get to learn a lot from your journey. तो देखिए, मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी वाज आई थिंक लिटिल यूजुअल आल्सो एंड अनयूजुअल. उसमें इवेंट्स भी थे. सो हाउ थिंग्स स्टार्टेड, अगर मैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच जाऊं तो इन 7th क्लास आई रियलाइज आई वांटेड टू मेक अ वीडियो गेम. तो आई लर्न प्रोग्रामिंग फॉर दैट. आई वेंट टू NIIT की मेरे को गेम बनाना है, प्रोग्रामिंग सिखा दो. दे सेड 7th बहुत छोटे क्लास में हो अभी तुम, 12th के बाद आना. दे सेंट मी होम. तो पहला तो झटका वही था. देन फॉर्चुनेटली उस समय तक इंडिया में थोड़ा IT बूम स्टार्ट हो गई थी. दिस इज 1992. तो उस समय IT बूम थोड़ी शुरू हो गई थी. तो देयर वाज वन प्राइवेट दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मेरे घर के पास खुला. फॉर्चुनेटली दैट टीचर टुक मी एज अ स्टूडेंट. उनको भी झटका लगा था. उस समय तक मैं 8th में आ गया था. तो शी सेड 8th का बच्चा लैंग्वेज सीखना चाह रहा है गेम बनाने के लिए, पहली बार देखा है मैंने लाइफ में. पर फॉर्चुनेटली शी टॉट मी एंड C लैंग्वेज सिखाई उन्होंने. तो वो था. उसके बाद क्या हुआ कि माय फादर वन डे ही सेड, ही वाज अ CA. तो इनिशियली यही था कि CA ही करनी है. बट वन डे ही सेड कि तू इंजीनियरिंग कर लियो बिकॉज तेरा शौक है. अनफॉर्चुनेटली हमारा एक एक्सीडेंट हो गया. नेक्स्ट डे माय फादर एंड माय ब्रदर डाइड. उसके बाद बिकॉज वो 1990s का टाइम था, माय मदर सेड प्राइवेट कॉलेजेस होते नहीं थे दिल्ली में इंजीनियरिंग के. माय मदर सेड CA करेगा तो अपनी फर्म में ही रहना है. जो फादर के बाद शी वाज सेइंग कि चला रही हूँ मैं. तो शी सेड अगर CA अपनी तो अपनी फर्म से ही करना है, कहीं जाना ही नहीं है. और अगर इंजीनियरिंग करेगा तो साउथ वगैरह जाना पड़ेगा जहाँ प्राइवेट कॉलेजेस होते थे. मतलब बिकॉज IIT दिल्ली के बेसिस पे आप अपना डिसीजन नहीं ले सकते. वो तो आपको पता ही है, 1-2% चांस ही होता है. तो उसमें वो उस जमाने में व्हाट्सएप, जूम कॉल, ये सब तो कुछ होता नहीं था. ट्रेन से आप जाते थे साउथ, तो एवरेज मिडिल क्लास आदमी ट्रेन से ही जाता था. तो 2 दिन लगते थे. तो वो मेरी मदर को ये था कि एक बार साउथ चला गया फिर तो तू साल में एक ही बार आया करेगा. वो तो प्रैक्टिकल है नहीं इस समय इमोशनली. तो आई टुक कॉमर्स. आई ऑल्सो रियलाइज कि अगर मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो IIT वगैरह में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा. जो आई रियलाइज कि प्रोग्रामिंग शौक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री के आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का कोई खास शौक था नहीं मेरा. तो आई रियलाइज आई डिड दैट. अब प्रॉब्लम क्या आई, 2002 के अराउंड आई रियलाइज. मैंने कहा यार ये तो मैं तो CA बनता जा रहा हूँ, इंजीनियर तो हुआ ही नहीं. अब बनना तो ऐप डेवलपर था. एंड ये बिल गेट्स मेरे उस समय, जो आज एलोन मस्क जोश दिलाते हैं, वो मेरे को बिल गेट्स दिलाया करते थे. तो आई रियलाइज, मैंने कहा ये क्या करना है. तो फिर व्हाट हैपेंड, फॉर्चुनेटली इंटरनेट शुरू हो गया था. नोकिया की साइट पे एक दिन आए ज्वाइन समथिंग, आई डोंट नो. उसके बाद नोकिया का एक ईमेल आया कि वी आर डूइंग दिस इवेंट ऑन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. 2002 की बात है. 11th या 12th नवंबर 2002. आई वेंट टू दैट इवेंट. वहाँ जाके मेरे को ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी में वो एप्पल गिर गया जैसे वो न्यूटन की ज़िंदगी में एप्पल गिरा था. तो मुझे रियलाइज़ हुआ मोबाइल ऐप्स बनानी है, फ्यूचर यही है. अब 2002 में आई वॉज डूइंग CA. इंटर पास कर चुका था CA की. तो आई स्टार्टेड डूइंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. मैंने साथ में बुक लिखनी शुरू कर दी क्योंकि मेरे को कोई और बुक मिली नहीं. बुक लिखने का बड़ा शौक था. बुक लिख दी. मेरी मदर को बताया मैंने, तो वो पहले 1 मिनट के लिए गुस्सा भी हुई कि बुक क्यों लिखी, CA करनी थी, CA करता. बट देन शी सेड चल ठीक है, CA तो हो ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब शी वाज ऑलवेज हैप्पी कि जब तक CA हो रही है बाकी कुछ भी कर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एंड शी वाज ऑलवेज हैप्पी टू गिव मी मनी फॉर बाइंग बुक्स. मैंने Amazon.com से 2000 या 2001 में बुक मंगाई थी. मतलब उस जमाने में कोई Amazon.com कोई नहीं जानता था, हम हिंदुस्तानी. तो अमेरिका से 2 महीने में बुक आई थी. तो वो सब करते करते आई स्टार्टेड डूइंग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट. इनिशियल पीरियड वाज वेरी स्ट्रगलिंग बिकॉज एक तो आपको स्टार्टअप क्या होती है पता नहीं था. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की कोई डिमांड नहीं थी. किसी के पास भी जाओ कोई बनवाते ही नहीं था मोबाइल ऐप 2-3 साल. फाइनली मुझे एक दिन 2003 या 4 की बात है, रिलायंस में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मिले. ही सेड
मेरे से मिलने आओ नवी मुंबई में रिलायंस के ऑफिस में। वहाँ मैं गया तो ऐसा लगा, मैंने कहा ये तो दुनिया में कोई नई सी चीज़ है, बिकॉज वहाँ गोल्फ कार्ट्स में ट्रैवल करते थे कैंपस के अंदर। वो आज भी मतलब मैं गूगल के कैंपस और फेसबुक के कैंपस पर्सनली गया हुआ हूँ, उनसे बेटर था वो DAKC का कैंपस, या उस जमाने में वो मुझे बेटर लगता था जो भी है। तो आई वेंट देयर। बहुत मतलब उस समय आई रिमेम्बर बॉम्बे जाना भी ऐसा लगता था जैसे आजकल की दुनिया में थोड़ा घर से बाहर नहीं निकल रहे ना, तो नोएडा का ऑफिस भी दूर लगता है। तो उन दिनों वो बॉम्बे जाना ऐसा था, बॉम्बे जा रहे हो पहली बार, मतलब मेरे फादर की डेथ के बाद पहली बार अकेले बॉम्बे जा रहे हो, मतलब थोड़ा वो था। तो फॉर्चुनेटली रिलायंस से एग्रीमेंट हो गया। अब रिलायंस से एग्रीमेंट हो गया पर 1 साल तक गेम लाइव नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त कहने लग गए तू फेंक तो नहीं रहा था, क्योंकि 1 साल तक गेम लाइव क्यों नहीं हुआ, बिकॉज अब वो रिलायंस भी अपने आप में एक स्टार्टअप ही थी उस समय, क्योंकि उनका भी कुछ सिस्टम सेट नहीं था, हमारा भी नहीं था इतना ज़्यादा। और दूसरा क्या था, उनके यहाँ ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हमारे यहाँ तो हम बना के भेज देते थे, वो 1-1 महीने तक रिप्लाई नहीं करते थे। तो वो धीरे धीरे समझ आया। तो इनिशियली इट वाज स्ट्रगलिंग, बट फॉर्चुनेटली बिकॉज बुक लिख दी थी, तो एक तो वो इंजीनियर ना होने का जो प्रॉब्लम थी वो कम हुई, बिकॉज पीपल फेल्ट बुक ही लिख दी तो कुछ तो नॉलेज होगी। दूसरा क्या है कि आई गॉट सम कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम रिलायंस टू क्रिएट स्टडी मटेरियल इन 2005। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। उसके बाद मुझे बहुत सारी ट्रेनिंग की ऑफर्स मिली, सत्यम में पढ़ाया जाके मैंने, काफ़ी और बैंगलोर की IT कंपनीज में पढ़ाया, काफ़ी नामी गिरामी। सो थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकलने लगा एज एन एंटरप्रेन्योर। एंड देन फाइनली इन 2009-10 आई रियलाइज्ड कि मेरे को अपनी एक प्रोडक्ट कंपनी बनानी है। तो आई स्टार्टेड प्रोडक्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। फिर साथ में आई स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड ओपन क्लास। अब वो ओपन क्लास में क्या था, प्रोडक्ट वगैरह तो चलो बना रहे थे, बट ओपन क्लास में क्या हुआ कि हमने कहा कि लोगों को फ्री वर्कशॉप्स कराएंगे या 100-150 रुपये लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। वो हमारा एम था, 150 रुपये से ज़्यादा किसी को चार्ज नहीं करेंगे। 150 रुपये भी यह था कि उसको पिज़्ज़ा खिलाएंगे, कोका कोला पिलाएंगे, तो 100-150 रुपये इसलिए लेंगे। तो अब वो प्रॉब्लम क्या हुई कि मैं लोगों को बैंगलोर में जाके तो 15,000 और 35,000 में भी कई बार पढ़ा पा रहा था पर एक दिन के में। पर यहाँ स्टूडेंट 150 रुपये में भी फ्री वर्कशॉप में आने को तैयार नहीं था, मतलब उसको पिज़्ज़ा भी खिलाते थे तब भी ज़्यादा नहीं आते थे। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि क्यों नहीं आते, बड़ा ह्यूमिलेटिंग भी लगता था। मेरी मदर भी कहती थी ये क्या इनिशिएटिव खोल रखा है, 600 रुपये 700 रुपये रोज के कमा रहे हो। रोज के भी नहीं, मतलब हफ्ते में एक बार करते थे, तो हफ्ते में 600 रुपये इनकम थी ओपन क्लास की। तो वो कर रहे थे। देन अब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जोश था। बिसाइड्स वो प्रोडक्ट जो बना रहे थे वो तो बना ही रहे थे, तो वो सारा होते होते ऊपर नीचे होते रहे। बट फॉर्चुनेटली ओपन क्लास में एक दिन ब्लैकबेरी केम, दे सेड वी विल स्पॉन्सर ओपन क्लास। उनको देखा देखी नोकिया भी आ गया, नोकिया ने भी स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। एक बार विजय को इवेंट में बुलाया, जो पेटीएम के फाउंडर है, उनको मैं 2005 में एक हमारा मोबाइल मंडे मीटअप होता था उसमें मिलता था, उनको मैंने एज अ जज बुलाया, वो आए। उसके बाद उन्होंने भी जॉब ऑफर 2012 में ही देनी शुरू कर दी थी कि तुम कंपनी को ज्वाइन कर लो। तो ये सब प्रोसेस चल रहा था एंड काफ़ी अच्छा हुआ। आप ब्लैकबेरी स्टार्टेड कॉलिंग मी एज अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीकर्स उनकी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली एज अ स्पीकर बुलाते थे तो खर्चा पानी भी वही देते थे पूरा आने बुलाने का। तो वो सारा था, आई थिंक इट वाज गोइंग गुड रिलेटिवली। एंड देन फाइनली क्या हुआ कि 2015 में एक सी चेंज एक आया कि इन बिटवीन मैं एक आध फाउंडर भी, को फाउंडर भी हुआ, एक आध स्टार्टअप में अपना प्रोडक्ट भी बना रहे थे, काफ़ी चीज़ें कर रहे थे। एंड आई स्टार्टेड रीडिंग लॉट ऑफ बुक्स। मैंने अमेजन पे एक बुक मंगाई, एक से दूसरी मंगाई, वो करते करते आज 208 पढ़ चुका हूँ मैं 6 साल में। तो उस पर्टिकुलर साल मैंने 57 बुक्स पढ़ी। तो मेरी मदर बोली इतना ज़्यादा उस समय पढ़ता, तू पढ़ रहा है, इतना स्कूल कॉलेज में पढ़ लिया तो टॉपर बन जाता है। मैंने कहा उस समय पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। अब 10 साल थोड़े थपेड़े सही हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, तो अब वो एंटरप्रेन्योरशिप की बुक्स पढ़ी जा रही हैं। मतलब मैं ज़्यादातर आई वाज रीडिंग रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिज़ाइन, ज़्यादातर बुक्स यही थी, एजाइल वगैरह, ये जो टॉपिक्स स्टार्टअप के होते हैं। तो ये लंबी स्टोरी रही, बट एम वही था कि मोबाइल गेम बनाना है। अब पेटीएम कहाँ से आया स्टोरी में, वो ये था कि विजय तो 2012 में कह ही रहे थे एक बार 14 में फिर मिल ले। तो वो कह रहे थे, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लाइफ में बताता हूँ, अब कई चीज़ें ना भगवान कराना चाहते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, सो आई वाज आल्सो अ मेंटर टू डेली प्रेस फ्रॉम 2016। तो मेरा ये फ्रेंड थे, ये मेरे को मतलब मेरे ना कई फ्रेंड्स के कॉमन फ्रेंड, ही वाज द कॉमन फ्रेंड ऑफ मेनी ऑफ माय ऑल फ्रेंड्स इन स्कूल। तो आई मेट हिम एट मोस्ट ऑफ दी बर्थडे पार्टीज, मोस्ट ऑफ दी फ्रेंड्स के फंक्शन। वो करते करते वो फ्रेंडशिप बढ़ जाती है एंड डेली प्रेस के अंदर फिर मैं मेंटरिंग करने लग गया। इसी तरीके से विजय कम से कम 3-4 बार मेरे से रैंडमली टकराया। एक दिन कैफे कॉफी डे में टकरा गए, एक दिन होटल में टकरा गए, एक दिन कहीं टकरा गए। वो जो एक्विंटेंस थी उनसे 2005-6 में, वो धीरे धीरे दोस्ती में बदलती गई। एंड बिकॉज वो बुला भी रहे थे कंपनी में, तो वंस ही कॉल्ड मी अगेन इन 2017। तो जब तक मैं सोच चुका था कैसी स्टार्टअप करनी है, बट बिकॉज अब विजय बुला रहे थे
तो मुझे लगा कि ठीक है भाई चले जाते हैं, और एज अ कंसल्टेंट में गया कि मैंने कहा 2-3 महीने नहीं कुछ होगा तो कैंसिल हो जाएगा, चलो अच्छी बात है, अपनी स्टार्टअप पे फोकस कर लेंगे। बट व्हाट हैपेंड, उनको बहुत अच्छा लगा मेरा काम इनिशियली, तो ही गेव मी एन ऑफर ऑफ वीपी, तो बोले वीपी बन जाओ। तो अब धर्म संकट ये हो गया कि अपनी स्टार्टअप चलाऊं या वीपी बनूं, तो वो एक था। तो देन आई रियलाइज कि मेरे थोड़े डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स ना बड़े सिंपल रहते हैं, सरस्वती लक्ष्मी शक्ति मैंने देखा, मैंने कहा ज्ञान भी पेटीएम में ज़्यादा मिलेगा, पैसे तो मिल ही रहे थे ऑब्वियसली पेटीएम में जाओगे तो। एंड अपने यहाँ देखो ऑब्वियसली स्टार्टअप ज़्यादा चल सकती थी, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ये लास्ट इवेंट है तो थोड़ा मैं मरता हुआ आदमी हमेशा सच बोलता है, तो वो बता रहा हूँ। तो उस समय क्या था कि आई रियलाइज कि यार अपनी स्टार्टअप तो काफ़ी साल से चला रहे हैं, अभी उतनी सक्सेस हुई नहीं है, एंड पेटीएम में एश्योर्ड मनी ऑब्वियसली था ही। एंड फाइनली शक्ति भी, पेटीएम का नाम तो ऑब्वियसली ज़्यादा है आज भी, मतलब कल ही एक इवेंट के लिए किसी कॉलेज के लड़के का फ़ोन आया, बोला सर आप 3 तारीख को है वो इवेंट, तो मैंने कहा सर हम वीपी पेटीएम करके आपका बना दें पोस्टर, मैंने कहा नहीं 3 तारीख को मैं वीपी नहीं होगा पेटीएम का। तो ये सर नहीं लिखने दो ना, क्योंकि हमने तो वीपी करके आपको बुला रहे हैं कल को स्टूडेंट कहेंगे एक्स वीपी को क्यों लिया है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग वो ऑब्वियसली शक्ति सरस्वती लक्ष्मी, मैंने कहा हर एक का आशीर्वाद ज़्यादा मिलेगा पेटीएम में, तो आई शुड लीव माई स्टार्टअप एंड आई शुड ज्वाइन। एंड 1-1.5 साल बहुत मज़ा भी आया इनिशियली। देन व्हाट हैपेंड कि आई हैड जॉइंड एज हेड ऑफ CSR एंड बिल्ड फॉर इंडिया, जो मैं प्रोग्राम लीड कर रहा था, इट वाज अ CSR प्रोग्राम। धीरे धीरे व्हाट आई रियलाइज वाज कि कंपनी के अंदर इतना ज़्यादा CSR का स्कोप था नहीं, बिकॉज इट वाज अ स्टार्टअप। क्या होता है कि जो इस टाइप की कंपनियाँ होती है ना, जैसे टाटा वगैरह, जो पुराने बहुत ग्रुप्स हैं, उनमें क्या होता है कि प्रॉफिट का 2% लगाना होता है, और उनका पुराना CSR का एक बैकग्राउंड है टाटा का या और पुराने 1-2 ग्रुप्स का, तो वहाँ स्कोप ज़्यादा है। व्हाट आई रियलाइज वाज कि एक स्टार्टअप में CSR का स्कोप है, बट उतना ज़्यादा नहीं है जितना मेरा इनिशियल एजम्पशन थी। तो मेरे दिमाग में थोड़ा होने लगा कि आई शुड लीव पेटीएम, बट अब वो पेटीएम में मज़ा आ रहा था, पैसे भी मिल रहे थे, सीख भी रहा था, तो मैंने कहा लीव करके कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे पेटीएम छोड़ने में। तो उसमें क्या रहा कि उन्होंने 2019 में जब वो दोबारा मोदी जी आए, तो उन्होंने एक बजट दिया। उस बजट में उन्होंने क्या करा कि उन्होंने, ऑल्दो आई वाज नॉट इम्पैक्टेड डायरेक्टली, बिकॉज उन्होंने आगे आगे जितनी जितनी इनकम होगी हर एक के ऊपर टैक्स रेट बढ़ा दिए। मतलब इंडिया में ना काफ़ी टाइम से 30% टैक्स रेट था हाईएस्ट, इन्होंने 43% या 42% कर दिया। तो मेरे को एक चीज समझ आई, और उन्होंने ना साइमल्टेनियसली कंपनी का टैक्स रेट कम कर दिया, 30 से 25 कर दिया। तो व्हाट आई रियलाइज, मैंने कहा ये तो सरकार क्लियर ही कह रही है कि अगर आप एक सीनियर जॉब वाले हो तो आपको डंडे पड़ेंगे, और अगर आप अपना एंटरप्रेन्योर बन के कंपनी बना के पैसे कमाते हो तो आपको फायदा होगा। तो मेरा दिमाग ना वहां से चलना शुरू हुआ। मैं एज अ सीए थोड़ा दिमाग टैक्सेशन में चलता भी जाता है, तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा अगर मैंने 10 साल नौकरी करी और सेम पैसे कमाए, और 10 साल एंटरप्रेन्योरशिप में सेम पैसे कमाए, तो एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा फायदा है। अब ऑब्वियसली दैट वाज अ बिग, मतलब चेंज अगर मैं छोड़ता नौकरी, क्योंकि वो था। तो व्हाट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वाज कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ। क्या मैं जीवन में नौकरी करना चाहता हूँ पूरी जिंदगी? क्या मैं जीवन में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ? क्या मैं पैसे कमाना चाहता हूँ? क्या मैं अरबपति बनना चाहता हूँ? मैंने सारे टटोला, एंड गुड थिंग वाज कि मेरे को एक्सेस थी पेटीएम में सीनियर लोगों की, सब कुछ मैंने उनको भी ऑब्जर्व किया। मैंने कहा ये लोग 10 साल से बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर नहीं बने या जॉब कर रहे हैं, इनका लाइफ क्या है जो एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आई वाज लीडिंग बिल्ड फॉर इंडिया, रोज एंटरप्रेन्योर मिलते थे, वीसीज मिलते थे, एंजल इन्वेस्टर मिलते थे, तो उनसे भी पूछा करा। तो मैंने जीवन में देखा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मेरे अंदर से एक आवाज आई, मैं देश में एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करना चाहता हूँ, मे बी एट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो, या थोड़ा बहुत सस्टेनेबल 1000-1500 वाली वर्कशॉप कर लो, मतलब इस टाइप से। आई डोंट वांट टू अर्न फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स दैट मच। दूसरा, आई रियलाइज कि आई वांट टू डू एडटेक, जो मैं पहले कर रहा था। जब विजय ने मुझे बुलाया उससे पहले, मैं 6 महीने पहले मैंने अपनी शुरू करी थी, और वो मैंने ना ओपन एजुकेशन प्रोजेक्ट में कन्वर्ट कर दी थी स्टार्टअप। तो आई रियलाइज कि मेरे को एडटेक में फोकस करना है पूरी जिंदगी, और मेरे को फोकस करना है लोगों को स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ाने में। एंड एक चीज मैंने और रियलाइज करी कि 2020 हुआ, कोविड हो गया। कोविड के अंदर क्या हुआ कि मेरी मदर हॉस्पिटलाइज हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हुआ एक बार पिछले साल। तो और सोचने का मौका मिला, और एक चीज पता चली कि लाइफ कभी भी जा सकती है, एक बुलबुला है। एक तो कोविड में वैसे ही एनवायरनमेंट ये था कि लोग मर रहे थे, जान पहचान वाले भी कई लोग मर गए कोविड में। दूसरा, जब मैं खुद हॉस्पिटल गया अक्टूबर एंड में, तो आई रियलाइज, मैंने कहा यार जिंदगी तो 1 सेकंड में खत्म हो जाती है। वो मेरे को डेंगू हो गया था, प्लेटलेट कम हो गए थे, मैंने कहा और 20,000 प्लेटलेट कम हो जाते तो ऊपर ही चले जाते।
तो आई रियलाइज्ड एट दैट टाइम सिटिंग इन हॉस्पिटल, और क्योंकि 2 दिन बिल्कुल ही खाली था मैं हॉस्पिटल में, और कोई रिश्तेदार भी नहीं आ पा रहा था कोविड की वजह से, तो बिल्कुल खाली होने की वजह से आई रियलाइज कि लाइफ में कर्म करना ज्यादा जरूरी है. पेटीएम फल दे रहा था, बट अपने काम में ना कर्म है. अब वो मैं आई डोंट नो वेदर आई विल बिकम अ यूनिकॉर्न फाउंडर और नॉट, वो भगवान के हाथ में है, भाग्य के हाथ में है. बट मुझे एक चीज समझ आई कि मैं स्टार्टअप क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज इवन इफ आई एम नॉट सक्सेसफुल आई एम हैप्पी डूइंग कर्म. पहली बार जिंदगी के अंदर मैं फल नहीं चाहता, मैं कर्म करना चाहता हूँ. जो मैं आज काम करूंगा, मतलब अभी तो ऑब्वियसली पेटीएम में आज लास्ट डे है प्रैक्टिकली, बट जो मैं मंडे से काम करूंगा, मैं कर्म करके ज्यादा खुश हूँ. और जो भी मैं अभी, क्योंकि थोड़ा सा हैंड ओवर वगैरह की वजह से फ्री था, तो आई रियलाइज कि मेरे को कर्म कहाँ मोटिवेट कर रहा है, वो है जो मैं अब करना चाहता हूँ, जो आई टोल्ड कि लोगों को पढ़ाना और एडटेक में एजुकेशनल कंटेंट बनाना, दैट इज मोर मोटिवेटिंग देन एनी अमाउंट ऑफ मनी आई कैन गेट, एनी पोजीशन आई कैन गेट. एंड उसी के वजह से आई रियलाइज कि चाहे पेटीएम छोड़ने के वजह से मेरे को शक्ति भी कम मिलेगी इमीडिएटली, तो ऑब्वियसली लक्ष्मी में भी नुकसान होगा, मे बी 2 साल बाद फायदा हो रहा होगा, बट इमीडिएट तो नुकसान एक बार होगा ही होगा. एंड सरस्वती वाले केस में आई रियलाइज कि देखो, सरस्वती जी का आशीर्वाद तो अपने काम में भी मिलना ही है, तो दोनों काम में तो लक्ष्मी और शक्ति को जरूर छोड़ना पड़ेगा. अगर मेरे को गणेश चाहिए, तो अगर मुझे जीवन में खुशी चाहिए, तो मुझे लक्ष्मी और शक्ति को छोड़ना पड़ेगा. दैट आई रियलाइज, एंड दैट्स व्हाई आई टुक दिस डिसीजन, वेरी हार्ड डिसीजन, मेरे लिए बड़ा हार्ड डिसीजन रहा अक्टूबर से, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड थिंकिंग, तो बड़ा हार्ड डिसीजन रहा छोड़ने का. बट मोर एंड मोर आई डिस्कस विद इन दी कंपनी, आउटसाइड दी कंपनी, विद माई फ्यू मेंटर्स जो मैंने अपने बना रखे हैं, तो दिमाग क्लियर होता गया. वो जैसे जैसे दिमाग क्लियर होता गया, मेरे को ये रियलाइज हुआ. एंड व्हेन आई एक्चुअली गेव रेजिग्नेशन, तो इट वाज अ हार्ड डिसीजन. बट मैं एक चीज बता रहा हूँ, पिछले 2 महीने पहले जब मैंने रेजिग्नेशन दिया था, और जो आज समझ लो प्रैक्टिकली लास्ट डे है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि एक बार भी ना मुझे मतलब टेंशन नहीं हुई. दुख तो देखो होता है, ऑब्वियसली एक चीज जाती है, बट वो तो आपका अपना ही डिसीजन है, बट टेंशन नहीं हुई. आई फील रिलैक्स्ड, आई फील मोर हैप्पियर डूइंग समथिंग न्यू. तो वो आई थिंक जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को, मैं इसलिए थोड़ी अपनी स्टोरी में ज़्यादा डिटेल में गया, क्योंकि काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन होता है, क्या हम जॉब करें, क्या हम एंटरप्रेन्योर बने. काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि क्या हमें जॉब करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, और वाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. तो मैंने एक चीज़ देखी कि अरबपति बनने के लिए एंटरप्रेन्योर मत बनो, क्योंकि देखो अब अरबपति बनोगे या नहीं वो पता नहीं. एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं काफ़ी बड़े बड़े लोगों को जानता हूँ, मैंने कईयों से बात करी, हर आदमी पैसे के साथ उतना खुश नहीं है जितना वो आज से 5 साल 10 साल पहले था. तो एक चीज बड़ी क्लियर व्हाट आई रियलाइज वाज कि पैसे का कोरिलेशन खुशी के साथ है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट इट्स नॉट देयर. तो आपको ये फोकस करना चाहिए जिससे आप खुश रहें. जब आप खुश रहोगे तो 15 घंटे काम करोगे, जब आप खुश रहोगे तो लोगों के साथ अच्छा काम करोगे, जब सब कुछ अच्छा करोगे तो पैसे भी आएंगे. तो बट कर्म से फल मिलेगा, फल सोच के कर्म नहीं करना. वो चीज मेरे को क्लियर आई, और 2020 में बड़ी रामायण महाभारत देखी, उससे और ज्यादा क्लैरिटी हुई थी दिमाग में, तो वो भी रहा. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर जर्नी. आपने हमें बहुत बताया, आपने हमें अपने पूरी जर्नी के बारे में, पेटीएम कैसे ज्वाइन किया, और अभी आपने हमें एक एंटरप्रेन्योर के, एक ट्रू एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट के बारे में बताया. एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर इट सर, वी आर वेरी ऑनर्ड. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे. सो मोस्टली क्वेश्चंस भी सारे कवर हो ही गए इसमें लाइव स्ट्रीम के. तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे. थैंक यू, बाय. It was great to have you, sir. Thank you. Okay, so now we are back. Yes, sir. So Navya will be our host for today. Navya, please continue. So, entrepreneurship is the inclination of mind to take calculated risks with confidence to achieve a predetermined business or industrial objectives. We would now like to welcome a strong business development professional skilled in global communication, networking, leadership, and marketing. He graduated from IIT Kharagpur with a master's in geophysics from the University of British Columbia. He is an esteemed business professional who has founded Learning While Traveling. He has also co-founded Planet and is the Kolkata leader of Due Dash.
We would now invite Mr. Vishal Kumar to tell us about how he decided to become an entrepreneur and share his journey with us. Yes, sure. Thank you very much for inviting me for this talk. So I can share my journey in brief, probably. So, as you introduced me, right? Like, I graduated from IIT and then I was in Canada. And then I worked almost 8 years. So almost 11 साल 3 साल उधर छुट्टी उट्टी लेके plus 8 साल something. I worked also in oil and gas. And while working, after a few years, what I started seeing was there was layoffs in company. So उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि एक स्किल काफ़ी नहीं है जीने के लिए. हर इंसान के पास एटलीस्ट 2 स्किल होना चाहिए, मनी मेकिंग स्किल एटलीस्ट. क्योंकि अगर एक स्किल जो था, इफ द डिमांड गोज ऑफ फ्रॉम द मार्केट, देन यू आर लाइक प्रीटी मच ऑन द रोड. ठीक है, जैसे कि अभी कोविड ने बहुत सारे सेक्टर्स को ये दिखाया कि एक स्किल इज नॉट एनफ. ट्रैवल इंडस्ट्री, जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बंद हो सकता है 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जो भी है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू सी, लोकल और इंटरनेशनल. इंटरनेशनल तो अभी भी बहुत जगह नहीं खुला है. ठीक है, वो और प्लस और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज. एंड दिस इज समथिंग वी नेवर रियलाइज्ड इन कॉलेज और स्कूल कॉलेज में हमें कहीं ना कहीं अर्जुन का एग्जांपल देके या किसी का एग्जांपल देके बोला जाता है ना कि एक चीज़ पे फोकस करो. बट एक्चुअली देखो तो ह्यूमन बींग्स हैव most of the things which are two in number. Like we have 2 eyes, two hands, 2 legs. सारे कर्म करने वाले ऑलमोस्ट दो दिए हैं और इतने सारे दांत दिए हैं, जो भी दिए हैं. तो कहने का मतलब है कि we should not just focus on one thing only. We should have a second thing at least. ठीक है. So even for entrepreneurs like who are like in full-fledged entrepreneurship, they should have at least 2 line of products. एक प्रोडक्ट कैन बिकम टू डेंजरस टू सर्वाइव इवन फॉर एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है. सो वही ले ऑफ्स जब होना शुरू हुआ तो हमें ये दिखा कि इस बंदे ने इतना साल अपने जीवन का दे दिया. कुछ लोगों का अर्ली ले ऑफ्स हो गया. हमें ना अर्ली रिटायरमेंट बोलते हैं उसको, बोल सकते हैं उसको इन अ रेस्पेक्टेड वे. दैट 55 के थे, 58 के थे. कंपनी वाज इन लॉस अ बिट, ऑयल एंड गैस. तो उन्होंने बोला कि आपको सॉरी, वी हैव टू गिव यू अर्ली रिटायरमेंट एंड दे गिव प्रोबब्ली सम मंथ्स ऑफ सैलरी एज कंपनसेशन, ऐसे ऐसे करके. तो फिर मुझे उस वक्त लगा कि कुछ सेकंड स्किल डेवलप करना चाहिए. तो अब जैसे कि सारे इंजीनियर्स करते हैं, दे गो फॉर MBA टू अपग्रेड देयर स्किल और डेवलप दैट सेकंड स्किल ऑफ सेल्स, मार्केटिंग, HR और ब्ला ब्ला. बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस में हैं MBA स्पेशलाइजेशंस. तो प्लान था कि MBA करेंगे और अपने आप को अपस्किल करेंगे. बट फिर एक स्टार्टअप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह आई डिड, mostly to my juniors and known people only, few small investments only. So that there was a dilemma between this MBA and startup, क्या करना चाहिए. So इस चक्कर में एक बचपन का सपना था मेरा वर्ल्ड टूर का. मैंने एक वर्ल्ड टूर ही कर डाला. ठीक है, ऑलमोस्ट 100 days का वर्ल्ड टूर था. एंड आई विजिटेड 31 B schools. एंड फॉरेन से, मतलब फॉरेन का करना था, 70-80 लाख का बजट था मेरा. And then foreign में क्या होता है ना, you can get to do some demo classes as a trial class, trial lessons. ठीक है. तो ट्रायल लेसन्स किया और उसके बाद ट्रायल लेसन्स करने के बाद मुझे थोड़ा दिखा कि MBA एक्चुअली इतना खर्चा करने लायक है नहीं. 70-80 लाख रुपया दे दो. It's actually to study with the best brains of the world or locality or country. So यही चीज़ होता है MBA, because there is no lab like engineering, there is no chemistry lab, there is no physics lab. It's just a group of bright individuals spending time like in a gurukul kind of. ठीक है. And teacher ऐसा है कि जब लोग इतने अच्छे होंगे ना, तो टीचर कुछ भी पढ़ाए कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे. तो ये सब देख के मुझे दिखा कि थोड़ा सा MBA ये है. तो I decided not to do MBA, rather probably help MBA people or MBA aspirants in career counseling kind of. You should also do this kind of thing, that you should meet your partner before deciding to get married, which I did. So I was doing it, maybe I was overdoing it, but you can at least do for some colleges, at least talk to your seniors, potential seniors or to be seniors,
और if possible visit the campus also, see the vibe etc. कि जो सोचा था वही है या कुछ थोड़ा नीचे भी है तो यही सब करके लगा कि स्टार्टअप करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा. आई हैव सम मनी ऑल्सो, सो आई डिड स्पेंड अराउंड 10 lakhs in my this world tour, और बाकी का 70 लाख आई सेव्ड and I started doing this startup called Learning While Traveling. So that's how things started initially. So we have a text on our YouTube live stream which says that your WhatsApp stories are very intriguing and very inspirational as you show your daily hustle. You even a few days earlier, before lockdown or in between lockdown as well, you shared learning while traveling with kids. It was, but that no one can think that a 5-year-old will be an entrepreneur. Yeah, sure. So if you think about it, first 10 years, if you think, you can split your life into decades, to understand it, blocks of 10 years. First 10 years are very crucial actually, if you think about it. ठीक है, क्योंकि you are almost blank paper and anything can be written on your head. ठीक है, next 20 years is also crucial, but you are no longer a blank paper now, you are a bit scribbled paper. फिर धीरे धीरे ये स्क्रिबलिंग बढ़ती चली जाती है एंड देन एक स्टेज पे ऐसा आ जाता है कि अब कोई स्क्रिबल कर भी नहीं सकता उस पर. नो, इट बिकम्स टू रिजिड. लाइक यू कैन थिंक ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. You would see, if you just compare yourself to them, you would see yourself to be more flexible, more learnable. You can unlearn and learn. भूल सकते हो, सीख सकते हो, relatively easier than them. Same things happen with the kids. The kids are even more easy to unlearn and relearn kind of thing. तो हमने ये सोचा है कि अगर इनको बचपन से ही थोड़ा सा डिज़ाइन थिंकिंग टाइप, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाते हैं, सेल्स स्किल सिखाते हैं कि रिजेक्शन कैसे हैंडल करना चाहिए. आप कुछ अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यू आर टेलिंग पीपल दैट दिस इज द क्लास वी आर डूइंग दिस दैट, एंड अदर पीपल आर सेइंग, और ये क्या है, क्या कर रही है वो. सो दैट टाइम वी फील बैड, राइट? ओवरकमिंग दैट द बैड feeling is kind of a sales skill which is not given much importance in schools. And आज एक सेशन भी था मेरा एक स्कूल में. I was talking about marks versus personality. So what I was saying is marks is okay till 12th, because as a system, I mean, unfortunately the system is fully focused on marks and the personality is not taken into account for your college admission. But after that, if you want to go to IIMs, if you want to go for job, if you want to go for even higher studies abroad, your personality will kick in. Okay? And slowly with life, you will see marks will start to shrink, marks ka weightage, and your personality will take over. I mean, your communication skill, your soft skills, basically. The hard skill जो marks बोल सकते हो, and soft skills. तो अगर इसको comparison करो, तो शुरू में hard skills होता है, जैसा system है अभी, and धीरे 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 in life it's all soft skills. Example सुंदर पिचाई, he has a great, he's a great orator. नरेंद्र मोदी, he's a great orator. ठीक है, वो खुद से सुंदर पिचाई doesn't write quotes and all, right? Maybe 5-10% of the time he does. बाकी time तो he is just communicating with people, managing people. So the whole idea was to teach all these skills in bits and pieces right from the childhood. And my son was the best candidate for me. So we said, okay, let's declare him as a junior CEO of our junior program at least. So he gets motivated. And seeing him, even his cousins who live in Mumbai have started their YouTube channel, and sort of distributing their certificate with founder co-founder label. So I'm quite happy to see that at least try to be an entrepreneur, try to start a startup. If you fail, so try to be a job giver. If you fail, be a job seeker. Otherwise अभी क्या हो रहा है ना कि उल्टा हो रहा है, लोग फेल हो जा रहे हैं जॉब सीकिंग में, तब जॉब गिवर वाले इसमें जा रहे हैं. So that's what we are trying to shift the mindset कि प्रायोरिटी इसको करो, not the other way around. Yeah, so that's the reason. Thank you, sir. Sir, Priyam Any other wants question, to, comment? Please. Sir, Priyam wants to ask, what do you attribute your success to? What do you attribute So your what's success to? I mean, whom do I give credit? Yes, sir. Whom do you give credit So- to for your success? The success, I will not call myself successful as of now. It's always success is a journey, not a destination. जिम जैसा है, रोज एक्सरसाइज करो, 6 पैक हो गया तो भी एक्सरसाइज करो, उसको मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज करो. So it's an evergreen exercise, just like gym. So but see, for entrepreneur, especially founders,
you need to be very very optimistic, because there will be lot of days जब लगेगा यार कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, लोग चले जा रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, नौकरी कर लो कितना अच्छा चीज़ है. बट फिर लगता है कि नहीं, मतलब अगर अंदर से उस चीज़ में बिलीव है, so then you get self motivated. And also with time what happens is right now we have around 20 employees. So अब उनका भी कहीं ना कहीं घर में कुछ contribution हमारा है. So we our burden और responsibility has increased. तो अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं करना है काम, इन्वेस्टमेंट उठाना या कस्टमर लाना या पैसे कमाना, अब मुझे उनके लिए भी पैसे कमाना है कि उनका भी घर चले. मेरा तो मतलब अगर मैं सब कुछ बंद करके भी करूँ तो शायद चल ही जाएगा, बट उनका घर का पता नहीं मुझे. तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड आई थिंक आई वाज अ पर्सन, और I mean, I never give up usually, and this attitude increases with time as you do startup. And somehow, unfortunately, a lot of youngsters fall into this instant gratification problem. ठीक है, तो स्टार्टअप करके एक और फायदा है कि आपका जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का हैबिट है, धीरे धीरे it will actually, you'll develop patience. So for patience also, you should definitely try at least working for a startup, if not start a startup. Thank you, sir. So we have another question from our live stream. Rohan wants to know about your experience in building efficient team at the time of the starting of your venture. Yes, a very good question. And building a team is much harder than finding a life partner also, because life partner you don't spend 24/7 or majority of the time. But finding a good team is very necessary, especially for a startup, because initially money is not there, and finding people on shareholding and a little bit cash, not so simple. So we made mistakes, we had wrong people, we had right people. So बहुत सारी गलतियाँ हुई. फिर हमें धीरे धीरे समझ में आया कि थोड़ा सा लोगों को एक बार में बहुत सारी चीज़ें ना दो, उनको थोड़ा सा आवरली वेज या डेली वेज इस टाइप का इंसेंटिव रखो कि आज इस टाइम पे ये काम करोगे, ये टारगेट अचीव करोगे तो ये इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज you will not get anything, or you will get this much only, something like that. So salary ka, let's say 50%, 40%, depending on what kind of things you have, you should put a bit of incentive. And discipline is very important, especially now when we are run classes, online classes. So coming on time and leaving on time, such a simple thing, and you will be surprised how lot of people cannot even follow this simple thing, just coming on time and leaving on time. And we have some foreign teachers. I mean, most of our teachers are foreigners actually. 5 countries we have, including India. We have teachers for different classes, kids and teens and adults. सबके साथ ये हमने एक कल्चर बनाया है, एवरीवन हैज़ टू कम ऑन टाइम, एवरीवन हैज़ टू लीव ऑन टाइम. ठीक है, अगर उसने नहीं किया तो वी ट्राई टू एटलीस्ट पॉइंट आउट कि आपने मतलब टुडे यू आर नॉट ऑन टाइम, और टुडे यू आर लेट, एंड टुडे योर सेशन हैज़ ऑल्सो गॉन लेट. सो इसको थोड़ा सा हम बहुत स्ट्रिक्टली और सीरियसली लेते हैं टू डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वर्क कल्चर, इफ यू कैन से. And sir, as you said that a lot of entrepreneurs is what they fear to fail. But what I think is, if they are failing, I consider failing as falling. But when you are running, it's important to fall forward. At least अगर आप winning line पे खड़े हो, if you fall forward, you will pass the winning line, and at least you have completed the race. So what's your take on that? Yes, of course. I mean, very simple example is cycling. मुझे एक नाम बता दो कोई जो बिना गिरे साइकिल सीख लिया, कोई नहीं मिलेगा, राइट? बट द थिंग इज, लोग क्या सोचते हैं ना कि साइकिल से गिर के उठना इज नॉर्मल, बट लाइफ में गिर के उठना इज नॉट नॉर्मल. आई मीन, वी एक्चुअली एसोसिएट this falling and standing up as a normal thing for some activities, whereas other activities it becomes a taboo, or it becomes a very very demotivating thing. But failures are part of success. मार्क्स हमारा कितना बार ऊपर नीचे हो जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली एक और प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम का, आई मीन अप टू 12th एटलीस्ट, कि यू आर एवरेज भी होता है तो 2-3 टर्म का ही होता है. बट एटलीस्ट इन कॉलेज आई थिंक दे हैव फॉलोड वेस्टर्न कल्चर, या जो भी है 4 साल 3 साल 5 साल
एक साथ GPA होता है, which gives cumulative grade point average CGPA, which gives more of a average performance review rather than just a spike. Although it's an average, so it's still a bit skewed because average itself is very biased to anomalies. But अगर वो mean की जगह median कर दे, so probably it would be a better performance thing. But failures are okay to have. I mean, it's okay to fail, and we should celebrate failures because only those people can fail who try. साइकिल से वही गिर सकता है जिसने साइकिल कभी चलाया है. जिसने साइकिल को छुआ ही नहीं, वो क्या गिरेगा? वो तो अपने फॉल्स प्राइड में जी रहा है कि मैं गिरा नहीं कभी साइकिल से. अरे आपने चलाई ही नहीं तो गिरोगे कैसे? राइट, तो यू आर एटलीस्ट वन स्टेप अहेड. आई मीन, साइकिल का एग्जांपल ले, जिसने कभी नहीं चलाया, जो गिरा और जो गिर के सीखा, राइट, एटलीस्ट 3 स्टेज ले सकते हैं, राइट. सो जो जिसने कभी नहीं चलाया हो, तो मैं तो उसको मतलब लोएस्ट ही स्टेज पे मानूंगा. आई वुड हैव लीस्ट रेस्पेक्ट फॉर दैट पर्सन, एंड ऑब्वियसली द मोस्ट रेस्पेक्टफुल इज जिसने सीख लिया उसको. बट देन बीच वाला इज ऑल्सो नॉट बैड, राइट. आई मीन, एटलीस्ट ही और शी ट्राइड. सो दैट्स व्हाट माय टेक इज. Yes, sir. Sir, what was your biggest fear throughout your journey? Biggest fear? Yes. Yeah, आपने the कहा biggest. साइकिल से गिरते हैं. Yeah, sure. So biggest fear, I think every now and then I have face is actually. So now I don't fear more for myself, but I fear for the people associated with me. So be it my family, which lot of people care. I mean, most people care anyways. But even our employees are like our family now. Like I was saying in the beginning, sometime back also, कि making sure that their salary or their incentive, etc., reaches on time is sort of my priority. I worry more about their salary than my own salary in lot of phases. So I always fear that I should not फेल देम, कि अगर उनको सैलरी नहीं देंगे तो उनका भरोसा हमसे उठ जाएगा, मेरे से इंडिविजुअली उठ जाएगा, लेट्स से कंपनी से भी उठ जाएगा, फिर लोग कंपनी छोड़ देंगे, फिर कंपनी का ब्रांड भी खराब हो जाएगा. सो लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर. सो आई ऑलवेज एवरी डे फियर. इट्स लाइक आफ्टर मेकिंग 6 packs we fear of losing 6 packs. In simple words. Yes, sir. Any other question? Yes, sir. So, what do you think is the one quality which is one quality or one mindset that you actually need, like every entrepreneur needs to have this Yeah, one quality? discipline. I think discipline is the one quality that every entrepreneur need to have pretty much as a prerequisite. ठीक है, तो होता क्या है कि आई थिंक बहुत सारा प्रमोशंस, आई मीन प्रमोशन एज इन एडवर्टाइजमेंट एंड मोटिवेशन चल रहा है कि यू शुड स्टार्ट एट अ वेरी यंग एज एक्सेट्रा. बट एंड कॉलेज एज, कॉलेज में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे. बट आउट ऑफ दोज पीपल, I don't know, a huge percentage or a very significant percentage, I'm not sure about the number, are not very serious, are not disciplined also. ठीक है, अगर उनका क्लास वगैरह भी चल रहा है, वो वीडियो ऑफ करके सो जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, किसी भाई को बैठा देंगे, किसी दोस्त को बोलेंगे कि यार तुम थोड़ा 2 डिवाइस से ऑन हो जाना, एक में मेरा नाम डाल देना, एक में ना. तो प्रॉक्सी इज वेरी इजी एंड पीपल फील वेरी प्राउड ऑफ दिस कि मैंने टीचर को बेवकूफ़ बना दिया, देखो फेक अटेंडेंस ले लिया, ये किया वो किया. बट इवेंचुअली इट्स नॉट द टीचर हु विल सफर और द कॉलेज हु विल सफर, इट्स यू हु विल सफर. क्योंकि वो चीज़ तुम जीवन भर कर नहीं पाओगे और तुमने फी दे दिया है ऑलरेडी कॉलेज का या जो भी है, मतलब पास भी हो गए. बट रियल लाइफ में क्या होगा ना, हर दिन एग्जाम होगा. आई मीन, आज तो एग्जाम में इधर उधर से चीटिंग भी कर लोगे, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, कोई बता दिया बगल से, बुक खोल लिया बगल में. बट रियल लाइफ में तो हर दिन एग्जाम होगा, तब कैसे चीटिंग करोगे? एंड लाइक आई सेड, पर्सनालिटी किक्स इन एंड यू कैन नॉट जस्ट फेक योर पर्सनालिटी. मार्क्स तो इधर उधर चीटिंग करके ले भी आओगे, पर्सनालिटी कैसे चीट करोगे? So very true. Thank you, sir. So, another question for you is that what do you look for in an employee? Like you have founded things, so what is the one thing you look for in an employee, a good employer? So for us or LWT and even for me,
that coming on time and leaving on time is the very first thing I look for. ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ उनको, प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, बट ये सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपने कमिटमेंट किया, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो खुद की भी नहीं सुनता. ये एटीट्यूड आई लाइक, आई लुक फॉर दिस. तो इवन जब भी हमारे एम्प्लॉयज़ लेट करते हैं या जो भी है ना, ऑन टाइम वाला चीज़, सबका डेडलाइन एक रहता है, and we are very strict on maintaining these deadlines. And be serious about, if somehow you miss the deadline, you should pre-inform. That's what we expect. So this is something we expect, very simple: coming on time, leaving on time, follow the very basic discipline. Or then there is a secondary thing that we look always, and I think universal skill, सबके अंदर सीखने का थोड़ा सा मन होना चाहिए. You should be not ashamed of accepting your issues. इंडिया में बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते सही से, फ्लुएंटली नहीं बोल पाते. It's okay to accept, and then you should learn, practice, and try to improve. Not like live in a false pride कि है ना, मुझे इंग्लिश नहीं आता तो क्या हुआ, मैं तो मैथ्स अच्छा है, मैं तो कोडिंग आता है, ये है वो है, मैं तो कर ही लूँगा, जो करना है हीरो बन जाऊँगा. तो समथिंग not a good attitude. I mean, eventually they realize all this. And since now we are all in virtual world, a lot of things are happening. A lot of MNC's job are going to be held virtually, and communication is going to become very, very important, the virtual communication. So जिन लोगों का communication skill में issues है, I would like to give them advice that kindly improve your communication skill, work on that, because the whole world is going to shrink to almost zero radius in the online world. है ना, अभी हम लोग इंडियन है यहाँ पे, but there is nothing that prevents someone from joining from US, Canada, UK, सब लोग, it can be a very multicultural. I mean, virtual world is going to be very, very multicultural. 200 countries all in probably one meeting or one company is possible now. Thank you, sir. You very much proved that the Warren Buffett quote, he said that not having good communication skills is like winking at someone in the dark. It wouldn't do any good. Yeah, so thank you very much, sir. Thank you for sharing your journey and your insightful words. Thank you, sir. Thank you for joining us. Thank you very much. So we have, I think, our next guest. So over to you. Thank you very much. Thank you. As the saying goes, alone we can do so little, together we can do so much. We would now like to welcome our next guest who has built communities all his life. Whether it be his family business or dailystartups.org, he has shown us the real meaning of success through his hard work. A very passionate person, he is the best in whatever he does. Be it being the best sales professional in 2014 of Micromax Informatics, or starting dailystartups.org community from a Facebook group of just two people, to moving it to raising funds of 4 million for 15 startups, we would now like to welcome Mr. Shivam Ahuja. Thank you so much for joining us today, sir. Please tell us about your journey. Thank you so much for great welcome, and its pleasure is all mine for to be part of this gathering. And so I wish you all the best for amazing days, because you guys are doing some amazing stuff for your college students as well. And I'd love to share my journey, but before, I just want to understand who all are actually attending it, so that I can actually deliver the content according to that. So, only students who want to know much more about the entrepreneurial world, and what we can conclude it as on future entrepreneurs are watching your session right now. I got it. So first of all, you have to understand, it's not easy. It's not easy that it seems to be, but that's okay. Everything that not seems easy, it doesn't suppose you should not chase it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो, you have to keep one thing in mind. You have to work under some mentor. You have to work under some leader where you feel good. For example, if you talk about Ritesh Agarwal, when he was building Oyo rooms, he actually stayed for in Airbnb. He actually stayed in Airbnb, and he did his kind of internship. Though he was working in Airbnb, but he was doing his homework while just maintaining all the points when he was staying in Gurgaon.
Similarly, if you want to launch a say for e-commerce company in the next 2 years, I believe you should work with the e-commerce company as an intern, as a full-time profile, or as a whatever. But you have to work under e-commerce mentor. So my strong piece of advice for the people who want to start a venture is don't rush out, right? Don't rush out. Because in the market, there is a kind of FOMO. If you don't do right now, you are missing the world, right? It's not like that. I'm 31 currently. The moment I'm speaking to you, I'm 31 years old, right? I had equal passion when I was 24 years old. But you know what? I feel I just started my journey. Even after 4 years after what I'll be doing my entrepreneurship journey only. Maybe this venture, maybe next venture, but I'll be doing into entrepreneurial for sure. So you have to keep in mind if you're 21, 22, 23, don't rush out. Don't burn out. Because this is the age when you feel like हो नहीं रहा यार, ये समझ नहीं आ रहा, ये स्केल कैसे होगा, आइडिया का प्रोटोटाइप नहीं बन रहा, प्रोटोटाइप का स्केल नहीं हो रहा. There will be so different problems. It's good to chase these problems, but on the same time, just remember, end of the day, you have to appreciate what you are doing honestly. Second, you have to make you understand कि अभी टाइम है मेरे पास में. अभी ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है. अभी मैं जस्ट स्टार्ट किया है, तो मेरा मेन पर्पस है लर्निंग, कि मुझे जितना लर्निंग मिले, not from college studies, not from college books, but from the real markets. That's the main learning one budding entrepreneur should go and learn. Not just, there is a fad, everyone becomes an entrepreneur, मुझे भी entrepreneur बनना. वो नहीं होना चाहिए. So from my personal experience, I don't know whether you remember it or not. Once you and I, we had a call, midnight call. You taught me that if you are good at your skill, I told you about that I'm good at fitness skills and I have got knowledge of that world. You taught me that it's okay if you have that skill, but what's more important is that you should know how to sell that skill in the market. If you 100%. If you remember that call. Though I don't remember, I'm so sorry for it. I have a problem of, don't remembering so many things out there. But yes, that's the thing I believe in. If you know something, then it's great. But you should be good at selling. And this is not my words. This is a concept of ikigai. I've told it several times on my Instagram, there is a concept of ikigai one should follow in their life. First, you should be good at something. You should be good at something. Like Sachin Tendulkar is good at cricket. He's the number one cricketer in the world. The second, you should make money out of that skill. He makes a lot of money. Second. The third, what actually world needs. कि क्या उसको दुनिया की भी जरूरत है? मतलब दुनिया को उसकी जरूरत है या नहीं? सचिन की जरूरत पूरी दुनिया को है. So that's also very important. And fourth, whether you are passionate about it or not. Like imagine you are good at say for singing, but you're not passionate about singing. Or maybe you're passionate about cricket. You are good at cricket, but you're not passionate about it. तो ये चार चीजें हैं, अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, then you can do great stuff in your life. Yes, so that is very true. Ikigai does tell us about to focus more on ourselves. And it has also mentioned a lot about how to live a longer life, and it has focused on islands of Japan and everything. So, sir, what are your favorite books except for Ikigai? What books do you recommend for all of us to read? So let me just change my position because there is some noise here. So talking about the books, I used to read a lot of books, right? If I talk about my choice list, I really love 0 to 1. It's an amazing book, 0 to 1, right? Then my all-time favorite is Alchemist. So if you know a book called Alchemist, that's my all-time favorite. So 0 to 1, Alchemist, and there's a beautiful book called Tools of Titans. And it's actually covering all the great habits of the best leaders in the world. For example, what exactly Mark Zuckerberg is doing, or maybe what the Tesla is doing, what the Elon Musk is doing as a part of daily habits. So this Tool of Titans is also an amazing book. So 0 to 1, The Alchemist, Tools of the Titan. These three are all-time favorite books of mine. The top 3 books. I'll definitely read all of them, sir. And also, I recommend a website. I know a website where the leaders, what kind of books they are reading. It's just, mentioning about that. The website name is Pluto Academy. It's free of cost. Pluto Academy. You just go there and just check out what Kunal Shah is reading these days. Or maybe what Elon Musk is reading these days. That's nice website. I really like it. Yes,
So now we all have a website to go and stalk. We're sure about that. So your domain flipping course is very famous. Please tell us about it. Please tell us more about it. So what I believe, Navya, these days a lot of youngsters are doing side jobs. Like take an example, 10 years back or 20 years back, people used to work in McDonald's. People still are doing work in McDonald's as a part of side jobs. But imagine you are 9 to 5, you're chasing your college education, and in side jobs, you are going to McDonald's and make a side income out of it. Now, internet is the superpower these days. If you understand internet and if you know how to make money out of it, there are a lot of people who are making money out of it. If you follow Gary Vee, he just shared a post how a basketball card is selling in 2 crore rupees, just a basketball card, right? And he made good money out of it. Similarly, lot of stuffs are present on internet. If you know how to deal with it, you can make money out of it. Take an example. Everyone knows domain names. How to buy a domain name is very easy. Just go to GoDaddy and just buy a domain name of 299 or 399 or 500 rupees. But do you know these domain names, just domain names, sell for millions? For example, in 2019, carinsurance.com sold for 50 crore rupees, just a domain name. In 2019, there is a domain name called CBD Oil, cbdoil.com. It sold for around 5 crore rupees. What CBD? It's kind of medicinal component. You say marijuana or you say bhang. So this cbdoil.com sold for 5 crore rupees. Forget this. Recently, few years back, Mark Zuckerberg की एक लड़की हुई. उन्होंने उसका नाम रखा चैन और फेसबुक पे पोस्ट डाला, hey world be blessed with a baby daughter. उसका नाम हमने चैन जुकरबर्ग रखा. And guess what? जैसे किसी इंडिया में किसी को पता चला फेसबुक का पोस्ट पढ़कर, so that Keralite boy booked a domain name chanzuckerberg.com and .org. And few days after, Mark Zuckerberg reached out to him and purchased his domain name. So it's a serious kind of business. If you know what's happening in the market, buy a bottle.com, maybe a charger.com, maybe a wire.com. All these domain names are multi-million dollar domain names. But you should be early at this. For example, Bitcoin was very early around 10 years back, or maybe 5 years back. If you have a domain name called coinbox.com, or maybe coingate.com, or maybe coinxyz.com, you can sell them in millions. Not millions, at least in lakhs. In fact, I am the founder of a company called skillcircle.in. But skillcircle.com owned by someone else and is selling me for 7 lakh rupees. That's the crazy businesses. Patanjali, which is the biggest FMCG company of our India, they don't have a .com domain name because someone already bought .com domain name patanjali.com and he's selling for around 50 crore rupees to Patanjali Group. And now they're negotiating. So it's a crazy business out there, but you should know the techniques of the business to get into it. But yes, as a part of side hustle, during your college studies, you can invest your time into domain names and you can make some money out of it. Yes, this does sound amazing. I mean, especially with the Chan Zuckerberg and about Patanjali. So we have another question for you. What was the most motivating experience you had while interacting with the industry experts recently on your Instagram live? So for Instagram live, okay, I will share that. But my life motivating experience was because I was helping so many e-cells around 5 years back, the entrepreneurship cells of different colleges, right? I used to organize meetups and so many crazy stuff out there. So one fine day, I got a call from Association of Indian Mobile and Internet Companies, right? So there is an association out there, and they just called me, hey Shivam, we have this mega event lined up for next month, and we want to invite Ritesh Agarwal for that. Ritesh Agarwal, the founder of Oyo Groups. And guess what? I met this guy just through Facebook by just helping some Oyo user, and he was so impressed with me and just interacted. We exchanged the number, and he said, I'll just take you over a lunch. मैं आपको lunch में लेकर जाऊंगा, आप जरूर आना मेरे पास में. We met, become kind of good connects and all that. And guess what? I just invited him to become a speaker at that event. And he got ready, right? And when he came to that event, become a speaker over there, and he just said one thing on the stage. You know what, audience? Almost 400 people in the hall. I just came here just because of one guy, that Shivam out. And whole crowd was, watching me. Who is that? Who is that fellow? Who is that fellow? And every damn investor, tech leaders, directors, the founders was actually, glancing at me.
that particular moment was, my life moment. Bas, ab paisa nahi chahiye. This is the guy who was actually giving credits. So for a community enabler like me, these small things matters a lot beyond money. So for that, me, actually makes a big day of my life. So yeah, similarly for Instagram session, I have seen some amazing movements, and I'll be, hosting more Instagram session in coming days. So that's amazing. I mean, a community builder like you have inspired a lot of us to build communities. And about your Instagram live as well, we really look forward to all your other Instagram lives. Coming to the topic of social media, Gary Vee recently said that LinkedIn is actually having a 2012 Facebook moment. So whatever we share on LinkedIn is actually getting a lot of exposure. What's your take on that? Do you agree with it, and to what extent? LinkedIn is underrated currently. If you remember, around 4 years back on Facebook, tag a friend whose name starts with P and he will give you a pizza, right? That kind of the posts were running 4 years back. The LinkedIn is going through that same phase. That means if you're posting something, if you're tagging more people, or if the people is networking with you, you'll become an influencer on LinkedIn. So every platform have a certain period of time. For example, if you were on TikTok in the initial 2 years creating a lot of content, you would have been influencer right now. Similarly, if you are doing right content on Instagram Reels right now, or maybe YouTube Shorts right now, you'll be influencer after 2 years. Similarly on LinkedIn, if you know the content and if you know how to put the context and putting on LinkedIn, you can create good network out of LinkedIn. And as a smart chap, you should know how to convert this network into your money network or your network or whatever you can say. But yes, LinkedIn is the most underrated platform, and I suggest everyone to make most out of it. I give you a use case. Just 2 days back, I just had a discussion with my HR, and we were hiring for sales people, sales profile out there, right? And we got around 108 applications. And out of 108 applications, we were doing the first level of shortlisting with them. Around 60 people were on LinkedIn. And guess what? The people who were on LinkedIn, we actually helped them in shortlisting. But the people who were not in LinkedIn, there is a kind of resistance. We were not approaching them because we didn't have their CV. So we thought, okay, these are LinkedIn's, their social proof is good. So that's why a lot of recruiters are actually taking LinkedIn very seriously. So if you're a student studying in college, trying to build their network, LinkedIn is a great platform. It's just like you need to learn how to put content in the right way. So, sir, I would like to know more about, and I guess many of our viewers must also be interested in that. What were your early sacrifices when you just started in this journey? Okay. So first of all, your personal life will go through turbulence. Maybe your parents, maybe your family, maybe your girlfriend, maybe your boyfriend. You have to sacrifice that. So imagine you have maybe a day planned for your girlfriend or your boyfriend or your mom. Maybe you have to sacrifice that. So first of all, you have to understand it's not a 5 days job. It's a 7 days job when you are into entrepreneurship, especially in the early days. It's a 7 days job. In fact, today also I am almost working 6 days a week. I try to keep it for 5, but it's 6 or 7 days a week. It's not that easy. So first of all, you have to sacrifice with your finance as well. Because imagine you're working in a startup or maybe you're working in an MNC, you'll get a fixed income every month. But the moment you switch to entrepreneurship, there is no guarantee you'll be able to make money next month. So you have to deal with it. Like when I started, for the initial 7 months, when I quit my job in 2014, for the straight 7 months, I had just 20 or 30 rupees in my bank account. That's the irony I've gone through, right? And most of the time, the financial crisis not just come once, it comes multiple times. It just, it's like sine curve. When you go high, you will feel like you're on the top of the world. You're the Elon Musk and you'll change the world. And when, average comes and then goes the dip down. That dip down moment is like, अब नहीं हो रहा यार, अब छोड़ना पड़ेगा यार, पैसे भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, कोई हमारे आइडिया को पसंद ही नहीं कर रहा. That moment is going to decide factor whether you're going to give up or maybe you're just going up again. So that's a very crucial journey. In the initial days, you have to face a lot. You have to make your mind very strong. More than your skill, your EQ is going to decide a lot. कि आपका emotional intelligence कैसा है. In fact, जो हमारी सबसे बड़ी स्किल्स की रिपोर्ट कहती है,
और जैकमा ने भी बोला कि आने वाले जो 5 सबसे बड़े स्किल्स हैं वो डेटा साइंस नहीं होगा, ना ही डिजिटल मार्केटिंग होगा, वो होगा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस. हाउ डू यू मैनेज पीपल. आज लॉकडाउन में हमने बहुत अच्छे से चीजें सीखी, बट कहीं ना कहीं हमने वो ह्यूमंस को मैनेज करने का स्किल इतना अच्छे से हम नहीं सीख पाते. एंड वी जस्ट बॉम्बार्ड इमोशन से, हम बॉम्बार्ड हो जाते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, अच्छे मैनेजर नहीं बन पाते. तो ये जो EQ स्किल है ना, ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा. इफ यू हैव गुड इमोशनल इंटेलिजेंस, how to pretend in tough times, how to handle the tough times, this thing is a game changer. So you have to learn a lot of EQ in your life. Sir, as just you mentioned, I'm sorry, I would repeat. As you just mentioned, Jack Ma has said that 5 years from now, digital marketing, data science, all of these skills won't be that much relevant. But what's your take on that? These courses like digital marketing, data science, as everything is shifting online. So, how much importance one student should give on such courses? So first of all, I want to tell you, अभी इंडिया की जो करंट पॉपुलेशन देखो आप, तो हम 130 करोड़ के आसपास बैठे हुए हैं, जिसमें से 40-50 करोड़ लोग अब ऑनलाइन आ चुके हैं. एज पर द नास्कॉम रिपोर्ट सब कुछ मानकर हम 50 करोड़ लोग ऑनलाइन हैं. अभी भी 70-80 करोड़ लोग ऑनलाइन नहीं आए. उनको डिजिटलाइज करना बहुत जरूरी है. और अब जो नेक्स्ट बिग वेव आएगी वो हमारे विलेजेस में आएगी, टायर 2 सिटीज में आएगी, टायर 3 सिटीज में आएगी. So there will be some company which is disrupting the villages through digital transformation. There will be company जो villages में जाएगी, tier 2 cities में जाएगी, tier 3 cities में जाएगी. I have just seen a company जो सिनेमा हॉल को एक बस के अंदर में बना रही है और villages के अंदर लेकर जा रही है. That's a great model, right? So मुझे ऐसा लगता है अभी digital penetration होना बहुत बाकी है और अभी आने वाले 10 साल और लगेंगे. तब तक US में, UK में, यूरोप में और नई चीजें आएंगी. But since India will take time to evolve as a digital nation out there, so अगर कोई digital की फील्ड में अपना करियर बनाना चाह रहा है तो मुझे लगता है बहुत अच्छा टाइम है. आने वाले 10 साल 15 साल यही फील्ड रूल करेगी. एंड अभी जस्ट मैं बात करते करते एक शख्स के सामने बैठा हूँ. अभी वो सिर्फ 22-23 साल के हैं एंड ही मेक्स मोर देन 2 लाख रुपीस फ्रॉम हिज ब्लॉग. तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आजकल के बच्चे कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो एक इंटरनेट पे एक रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं और इंटरनेट से कुछ पैसा भी कमा सकते हैं. So this is very interesting thing out there. Sir, what were your parents and family's reaction when you told them that you are going into this very vague world? Just a minute, Akshay. Sure, sir. Sorry. So the family reaction is still awkward. It's not like they are happy. वो बोलते हैं कि बेटा MBA कर ले, अभी भी तेरा देख कुछ हो सकता है. Because they feel like I'm doing too much in my life, and they feel like तुझे इतना नहीं करना चाहिए. तू क्यों कर रहा है? आज भी बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ तो है. For example, we have a family business. There's a gift gallery. तो बोलते हैं तू ये कर ले, मतलब इससे भी तो पैसे कमा सकता है. आराम से 2-5 लाख रुपए कमा लेगा महीने के, अगर थोड़ी मेहनत करेगा. तो क्या ये सब करता रहता है? So they will not understand, but they have a belief in me. उनको ये पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ. अंदर उनको पता है, but they actually don't say. तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता है, and it actually varies in different families. So first of all, you have to win the belief of your family. तो आपको अपनी फैमिली का बिलीफ कहीं ना कहीं जीतना पड़ेगा, और वो तब होगा जब आप उन्हें कर दिखाओगे, rather than कि आप बस बोले जा रहे हो. So for me, I actually proved in my college days. In my college days, I used to make 2-3 lakh rupees a year, roughly around 30,000 rupees a month, without doing any job. I used to do something online. So that time I proved, hey, I'm not just a normal guy. I can make money as well. So that trust actually gives you a lot of liberty to take freedom, to take risk, and so many things out there. So yes, the family reaction was never so good. Even today, it's not good, but they always support me. That's the best thing, I get from family. Sir, as just you mentioned, your family also wants you to do MBA. Your family also wants you to do MBA. A lot of students face the same pressure that their families are forcing them to go for the masters or any sort of other education, post-graduation. But a lot of people suggest that first, if you are doing MBA, what is MBA? MBA is Masters of Business Administration. So
first understand the business by entering it and then go further for MBA. So what's your suggestion for them, that should they go for MBA or should they first understand the market and they should then enter MBA? So I will answer the question this way. Like most of the people are doing MBA for the namesake of it. That's bad, right? If you are pursuing a degree or any course out there in the world, first you have to convince yourself. One. The second, since these courses are very expensive, for example, an MBA course will cost you 10 to 20 lakh rupees, and the moment you go abroad, it will cost you more. Then you have to take a self-awareness कि मैं 20 लाख रुपए अगर घर वालों से ले रहा हूँ, तो क्या ये लोन पे ले रहा हूँ या घर वालों से ले रहा हूँ? अगर आपके घर वालों के पास में पैसे हैं and they are happy कि मुझे 20 लाख रुपए अगर कल को मेरे कुछ भी हो जाते तो मुझे कोई परवाह नहीं है, they have a lot of money, then I say go for and do MBA. But if that money is coming on interest and you're taking student loan out of it and you are thinking I'll be taking 20 lakh rupees and I'll repay back, then it's a bad move. Because I have seen so many students that have taken their education debt and doing a job of say for 4 lakh rupees per annum. And it takes several years to pay that debt. That's bad. And if you talk about today, you name good MBA colleges out there. I'm actually guest lecturer to IIMs and so many outdoor colleges out there. I have talked to the students. The average package is something around 4, 5, 6 lakh rupees. And it took 4 to 5 years to pay that loan that they have taken from the market. Imagine you are doing a job of 5 lakh rupees and you are repaying in 4 years, 2 years of MBA. Total 6 years to repay that amount. It's a hell lot of amount. It's not that easy. तो अगर 6 साल आप कहीं पे काम कर लो तो क्या आपका पैकेज 5 लाख रुपए तक नहीं पहुंच पाएगा? अगर नहीं पहुंच पाएगा तो आप गलत कर रहे हो, आप गलत इंडस्ट्री में हाथ पैर मार रहे हो. So there is a theory of red ocean and blue ocean. So there is a red ocean which is very struggling, lot of people are there, competition is there, and people are still fighting for each other. Like there are manufacturing sector and there are so many sectors out there. And there is a digital ocean, there is a blue ocean, जहाँ पे opportunities बहुत ज़्यादा हैं. Take an example, Google is there. Google is making 5,000 crore rupees from Indian market, just Indian market every year, and 35% increment every year. तो 5,000 करोड़ इस साल का है. There is guarantee कि अगले साल 6,000 करोड़ है. There is a guarantee अगले साल 8,000 करोड़ है. The kind of growth Google is having. अब आप खुद से पूछो, आप रेड जोन में जाना चाहते हो जहां पे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ले रहा है, कोई मैकेनिकल ले रहा है और पता नहीं क्या क्या स्ट्रीम्स ले रहा है, और एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रो कर रहा है. The people need data science, the people need digital marketer, the people need data analytics. This is a growing sector. So a lot of students are actually not getting into it. कि उन्हें क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेल्फ अवेयर कि मुझे क्या करना है, और अगर एमबीए करना है तो खुद के पैसों से करना है, पापा के पैसों से करना है. So, sir, I would just like to conclude with one point, that you have been a mentor for ECEL and IC now ADGITM for past many years, and I wish to nurture this relation till the time lasts. And one more thing, that your signature bridge stories shall be motivating us as always. Anything last thing from you, sir? So you say the last piece of advice, kind of, right? Yes, sir. So सबसे पहले मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा. पहली चीज, कभी भी ना खुद को अंडररेटेड मत समझना, और अगर ऐसा कभी दिमाग में थॉट आए तो मेरे से बात करना. एज कूल एज दैट. बिकॉज जब मुझे लो फील हुआ है ना, आई ऑलवेज टॉक टू माय गुड फ्रेंड्स, स्पेशली दोज फ्रेंड द पीपल हु हैव डन समथिंग इन देयर लाइफ, जिन्होंने लाइफ में कुछ उखाड़ा है. जब भी मैं उनसे बात करता हूँ ना, दे आर सो हम्बल, उन्होंने हमेशा मेरी पॉजिटिविटी गिनवाई है. एंड देयर पीपल जिन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में, आपको हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं. तो फर्स्ट थिंग, अपने आप को जज नहीं करना, अंडर एस्टिमेट करना. यू आर द सुपर पावर, ऑलवेज रिमेंबर. द सेकेंड थिंग, इट्स ओके इफ यू स्टार्ट अ बिट लेट. कुछ लोगों को जल्दी करने की स्टार्ट पड़ी हुई है, नहीं यार मुझे अभी करना, इट्स ओके. प्लानिंग में अगर आप टाइम लगा रहे हो, ओके. एग्जीक्यूशन में टाइम मत लगा. अगर आपने आज प्लानिंग की और आप बोलो मैं 2 दिन लूंगा, लो 2 दिन. पर जब एग्जीक्यूशन करोगे ना, तब आप रुकना मत, ये ध्यान रखना. एग्जीक्यूशन इज लाइक फायर. वंस यू एग्जीक्यूट, नेवर स्टॉप. प्लानिंग में 2 दिन लो, 3 दिन लो, जितना लेना है लो, बट देयर हैज टू बी पीरियड ऑफ इट. बट मेक श्योर यू डोंट गेट इनटू अ फोमो फैक्टर कि जब हर कोई कर रहा है तो मुझे भी करना. दैट्स बैड थिंग. नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, सिट विद द विनर्स. एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहां पे आपको ऐसे लोग मिले जो आपको रोज इंस्पायर करें. इमेजिन अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे सिर्फ उन लोगों से बातें हो रही है, द पीपल हु आर डूइंग समथिंग गुड इन देयर लाइफ, एंड दे ऑलवेज शेयर देयर एक्सपीरियंस
to get into such communities जहाँ पे लोग speak out कर रहे हैं, अपनी चीजें share कर रहे हैं, जो भी उन्होंने life में face की. ये 3 चीजों में जब आप implement करोगे ना, you will see life is not that tough. It's pretty easy, and every day you are learning something. Because if I'm sitting here right now on Saturday afternoon or evening, I'm just learning 2 things, just straightforward. After this meeting, I'm just going to learn 2 things. So that's why always important you learn new things every day. That's how you grow. Thank you, sir. Thank you so much for your insightful words. These three advices are definitely some things that we all want to hear, and we all do feel discouraged at a lot of times. And but we will keep this in mind to never underestimate ourselves and to talk to the people who are already winning. Thank you so much for your words, sir. Thank you for being with us today. We You're feel welcome. very honored. Thank you, Lakshya. Thank you, Navya. And thank you all the ECEL team which actually made it possible. Thank you so much, sir.